welcome or welcome back to my channel. If you are new to this channel, hi, my name is Himanshi and I would be really happy if you take a moment and subscribe to my channel down below. So today I'm gonna make a sketch of Sumedh Mudgalkar as Krishna of Radha Krishna serial. Okay, so I have decided फ्लावर्स को मैं वाटर कलर से पेंट करूंगी और बाकी एरिया में मैं स्केचिंग करूंगी. ओके, सो बेसिक स्केच रेडी है. नाउ आई विल स्टार्ट विद पेंटिंग फ्लावर्स. मैं यहाँ पर वाटर कलर यूज कर रही हूँ. एंड गाइज, वन मोर थिंग, वीडियो में बेसिक स्केच वाला पार्ट इसलिए नहीं है बिकॉज जब मैं ड्रॉ कर रही थी तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया. बट डोंट वरी, आप लोग ग्रिड लाइन मेथड से बेसिक स्केच ड्रॉ कर सकते हो. You just have to install any drawing grid app और रेफरेंस पिक्चर को उसकी हेल्प से एडिट करो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. आई मीन अपनी शीट के अकॉर्डिंग रोज और कॉलम्स एडजस्ट करो और उतने ही रोज और कॉलम्स को शीट पर ड्रॉ करो. देन हर लाइन के साथ नंबर लिख लो ताकि ड्रॉ करने में और आसानी हो. ओके, कमिंग बैक टू द स्केच. मैंने वाटर कलर से फ्लावर्स को पेंट कर दिया है. Now I'll apply pencil colors over it to get contrast. सो पेंसिल कलरिंग हो गई है. अब मैं पेंसिल स्केचिंग करूंगी. यहाँ पर मैं 2B ग्रेड यूज कर रही हूँ. प्रोडक्ट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं, सो यू कैन चेक आउट देयर. डार्क एरियाज में मैं 2B पेंसिल ही यूज कर रही हूँ. बस मैंने पेंसिल पर हल्का सा प्रेशर अप्लाई किया है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, डार्क एरियाज के लिए आप डायरेक्ट डार्क पेंसिल यूज ना करें. यू हैव टू गो विद लाइट टू डार्क. आई मीन पहले कम ग्रेड की पेंसिल से शेडिंग करनी है
फिर धीरे धीरे ग्रेड इंक्रीज करना है ताकि ब्लेंडिंग करते टाइम डार्कनेस कम ना हो। यहाँ पर मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अब मैं इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करूंगी विद द हेल्प ऑफ 4B एंड 6B ग्रेड पेंसिल्स। अब मैं कॉटन बड से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। Now I'll start highlighting with kneadable eraser। अगर आपके पास kneadable eraser नहीं है then don't worry, आप नॉर्मल इरेजर से भी हाइलाइटिंग कर सकते हो। यहाँ भी मैं सेम प्रोसेस रिपीट करूंगी।
यहाँ पर इरेजर पेन यूज कर रही हूँ फॉर हाईलाइटिंग। ओके गाइज, सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, दैट्स व्हाई विल डू रेस्ट ऑफ द पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, and if you have any query, you can message me on Instagram. Also, don't forget to subscribe my channel. We'll see you soon in the next video. Till then, take care.